ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड एंड वेसिकुलर ब्रेथ साउंड, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड टिपिकली हम लोग को सुनाई देता है ट्रैके के ऊपर, और जो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड है इसको सुनाई देता है इंफ्रा एक्सिलरी और इंफ्रा स्केपुलर रीजन में। जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है ये हाई पिच का है, और जो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड है ये लो पिच का है। और जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है इसका कैरेक्टर हार्श एंड व्हिस्टलिंग टाइप है, बट in vesicular breath sound, the character is rustling type. The inspiratory and expiratory sound are equal in bronchial breath sound, but in vesicular breath sound, the inspiratory sound is prolonged than the expiratory. In forced breathing, let's say forced inspiratory or forced expiratory breathing, the expiratory sound is prolonged. There is gap present between the inspiratory and expiratory phase in the bronchial breath sound, but there is no gap between inspiratory and expiratory phase of breathing in the vesicular breath sound.